Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ashika and I am a CBSE 10th grader, and in today's video I will be I will be revealing my class 10 CBSE marks, not my board marks, abhi board exams hue ka hai. The marks of the first test series that we had in our school, which is basically my PT1, and in the end of the video I will also share the mistakes that I made and the mistakes that I think you all can also make in your exams. So make sure that you watch till the very end. And ये mistakes वाली चीज़ ना मैं तुम लोगों को subject wise बताने वाली हूँ. So this video is going to be very helpful for you. And चाहे तुम class 6, 7, 8, 9, 10th में हो, this is going to help you out a lot. मेरे को 11th 12th के बारे में आज तक ज़्यादा कुछ experience नहीं है, so I cannot say anything for that. But उससे पिछली classes के बारे में मैं तुम्हारी पूरी guarantee लेके बोल सकती हूँ कि जो मैंने मिस्टेक्स करी है तुम भी करोगे यार. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड ताकि यू डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स, बिकॉज राइट नाउ यू हैव द चांस टू अवॉइड देम बाय नोइंग व्हाट मिस्टेक्स यू आर गोइंग टू मेक एग्जैक्टली. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी रिवील माई मार्क्स. Over here I have my papers. We get these papers like to take घर पे, but अभी फिलहाल as you can see I only have 4 sheets. SST and एक और कौन सा सब्जेक्ट है, आई थिंक इंग्लिश. SST and इंग्लिश के पेपर्स वी डिड नॉट गेट टू टेक like to our house, so that is why I don't have that, but I remember my marks, so I'll be sharing. And please like trust me, I'll share my honest marks and मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा भी दूंगी अगर दिख सके. Not right now, I'm gonna build it up real good. I'll put up pictures over here when I say my marks. SST and इंग्लिश के लिए मैं नहीं कर पाऊंगी, बट आई एम टेलिंग माई ऑनेस्ट मार्क्स. एंड गाइज लेट मी टेल यू, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद माई मार्क्स, लाइक नॉट एट ऑल. लाइक आई कुड हैव डन अ लॉट बेटर. आई मीन जितना मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स एट ऑल. मतलब मेरे को बहुत कम मार्क्स मिले बिकॉज आई स्टडीड अ लॉट फॉर दिस. एंड मतलब जिन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कम पढ़ा था उन सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स मिले. And जिन subjects के लिए I have been studying before 10th even started, I have gotten very disappointing marks in those subjects. And like I'll tell you all my honest marks. So without wasting any more time, let us begin. So सबसे पहले I'll tell you all मेरे maths के marks, because that is like maths is very very dear to me. And I have gotten इतने ज़्यादा बुरे marks in maths. Like guys, I am used to 50 on 50 in maths. उससे एक भी नंबर कम इज नॉट गुड इनफ फॉर मी, बिकॉज आई स्टडी लाइक रियली रियली हार्ड फॉर दैट सब्जेक्ट. सो आई एक्सपेक्ट मार्क्स दैट लाइक जस्टिफाई दैट. सो इन मैथ्स आई हैव स्कोर्ड 45 out of 50, which was a very disappointing number for me. Wait, let me find my maths paper. So here I have my maths paper, and yeah, I've scored 45 out of 50. थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, बट येस आई हैव स्कोर्ड 45 out of 50. एंड लेट मी जस्ट फ्लिप थ्रू माई पेपर सो दैट आई कैन फाइंड माई मिस्टेक्स. ओके, पहला मिस्टेक मैंने एक MCQ में किया है जो मेरे को जेन्युइनली नहीं आता था, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट. आई विल बी मेनली डिस्कसिंग जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, सो दैट तुम्हें भी फायदा हो. मतलब MCQ में मेरी अपनी पर्सनल गलती बताकर मैं क्या ही करूंगी. नेक्स्ट आई हैव मेड अ कैलकुलेशन एरर, which like I'm so mad about, because it was such an easy question, but I have to make a calculation error and get my marks deducted. Anyways guys, ये mistake बहुत सारे बच्चे करते हैं, like maximum बच्चों की calculation error ही होती है, because 10th के maths के concepts are quite simple in my opinion. So make sure that you recheck your calculation like multiple times, and कुछ भी अपने head में मत करना please. Like even if you have low time, like just try to write it down and do it, so that like you minimize the chances of mistake. And one more thing, to minimize calculation mistake, make sure that you do maths like अच्छे से. रफ, तुम्हारा जो रफ पेज है ना वो भी मेसी नहीं होना चाहिए. Do you want to see my rough page? It is extremely messy. It is very messy, and that is why I made calculation errors. So make sure that your rough page is not messy. It should be neat. एंड बिकॉज लाइक अगर वो नीट होगा तो यू इट लाइक तुम्हारे मिस्टेक के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे. एंड ट्राई टू कीप इट नीट, ट्रस्ट मी, यू विल लाइक स्कोर मोर मार्क्स. एंड सी, आई नो कि नीट रखना होता है, बट पेपर के टाइम लाइक आई एम अंडर सो मच प्रेशर दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. बट बिकॉज ऑफ दैट आई हैव लॉस्ट अ बंच ऑफ मार्क्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू इट
for my next exam, and like मेरे next exam is reinforcement, which are after my summer break, so I hope they go well. Okay, wait, next mistake which we have done. Oh shit, yeah, मैंने पूरा ग्राफ गलत कर दिया, sorry. जिसके कारण मुझे 5 में से 3 मार्क्स मिले. लाइक ग्राफ में बोला था कि ट्राइंगल लाइक जो एक्स वाई एक्सिस के एडजेसेंट है उसको शेड करना है, बट आई शेडेड द ट्राइंगल विच इज एडजेसेंट टू द एक्स एक्सिस बिकॉज आई डिड नॉट रीड द वाई एक्सिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो लाइक ऐसे बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स तुमको अपने पेपर में भी मिलेंगे. सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सॉल्विंग देम एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेक सच अ मिस्टेक, बिकॉज I feel so sad to make ऐसे mistakes because I knew what to do. I just had to shade the triangle and I shaded the wrong triangle. And then I wrote the wrong coordinates because we had to write the coordinates of the vertices of the triangle. I know you are probably not able to understand the question, but just because I forgot to read one single word, I lost 2 marks. And 2 marks are a lot for me. And I hope they're a lot for you too as well. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. चाहे तुम्हारे लाइक अगर तुम क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ोगे तुम्हारे एट मैक्स 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट इट विल सेव यू सो मेनी मार्क्स. सो प्लीज जस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. What else? Where else have I made a mistake? Okay, yeah, the next mistake was also a silly mistake. I did not read the question properly and then I made a mistake. So that was it for my mistakes in maths. Now let me move on to science. So in science I have scored 47.5 out of 50. Wait, let me show you all. I don't know if दिख रहा होगा ढंग से या नहीं, but wait, I'll just put up a picture. नहीं दिख रहा. But yes, I have scored 47.5 out of 50. पहले my teacher gave me 43 out of 50, but apparently there were a lot of calculation mistakes and my teacher forgot to check a few questions. So then my total came up to 47.5, which is quite nice, but I definitely expected more. But I think I should be happy with these marks. So एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ था वो ऑलमोस्ट हर बच्चे का गलत हुआ था 10th में, बिकॉज ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था. सो आई विल स्किप दैट. नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई गॉट रॉन्ग वॉज अ बायोलॉजी क्वेश्चन. आई थिंक जो मैंने आंसर लिखा है वो आंसर के लिए मैक्सिमम स्कूल्स में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट इन आवर स्कूल द टीचर्स एक्सपेक्ट लाइक फुल फ्लेजेड आंसर्स. लाइक दे एक्सपेक्ट एवरीथिंग which is taught in the class, everything that is there in the NCERT and beyond the NCERT. So that is why the checking is a little strict. And then I made another genuine mistake, like diagram बना हुआ था and उसमें like I mistook trachea by the rings of cartilage. So I made that mistake and I think I got pretty good marks because all the mistakes that I made were genuine mistakes and I could not have avoided them under any circumstances. So I'm not that disappointed with the science marks. Now let us move on to Hindi. I think I have done pretty well in Hindi, guys. मैं हिंदी में कुछ भी पढ़ के नहीं गई थी. मतलब हिंदी के पेपर के एक दिन हिंदी के पेपर के एक दिन पहले मेरा बर्थडे था. I did not study anything on my birthday. I was out the whole day. I enjoyed the whole day very very nicely. I did not study and I got 47.5 out of 50 in Hindi, which if you ask like me it is a lot because I barely get good marks. I mean, no, I hate Hindi and मतलब मेरे को हिंदी पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता. It's the most boring subject in my opinion and it's like my worst subject. So I got really good marks, guys. And मतलब I'm so surprised that हिंदी में मेरे सिर्फ MCQs गलत हुए हैं, वो भी सिर्फ unseen passage में, which I could not have avoided under any circumstances because our school makes इतने ज़्यादा tricky unseen passage के questions. Like all the options feel the same. Like question था कि what would be the appropriate title for this paragraph, and all of the titles had the same meaning. We just had to pick out the most appropriate title, which is a very very difficult job to do. So I think I am very proud of myself. मेरे literature में एक भी mark नहीं कटा है. Yeah, all the marks, I've lost half a mark in grammar and I have lost 2 marks in unseen passages. So I am very proud of that. I think I did pretty good in Hindi. Next we have is AI. In AI I've scored 25 on 25, which is full marks. I'll put up pictures over there because I know तुम्हें नहीं दिख रहा है ढंग से, but I'm still showing because then you guys say कि oh my god Ashika, you are lying about your marks. I don't lie about my marks. Anyways, AI में full marks आए तो उसमें क्या ही discuss करूँ. I would like to show you all
my presentation for AI because I think it was nice. Yeah, I have highlighted all the keywords and I have written like answers with proper subtopics and everything, and I have left like a good space between even between the subpoints. So I felt that my presentation for this paper was very good, so I just decided to show it to you all so that तुम्हें पता चले कि कैसे present करना है. Now let us move on to वो दोनों papers जिनकी sheet अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं. SST. इन SST मेरे इतने कम मार्क्स मेरी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं आए हैं. लाइक ओ माय गॉड आशिका, आई हैव गॉटन इतने ज्यादा कम मार्क्स इन SST. एंड लाइक फनी थिंग इज दिस दैट we did not get a single day to prepare for all of the exams except SST. SST के लिए हमें Saturday, Sunday, Friday ये तीनों दिन मिले थे. And yet I did not study. I did not study on Friday. I barely studied on Saturday. And Sunday को मैंने थोड़ा सा पढ़ा था when I made that SST vlog because like पेपर के एंड तक आते आते ना आई गेट वेरी लेजी एंड वेरी बर्न आउट, एंड एट दैट पॉइंट आई जस्ट नीड अ ब्रेक. आई जस्ट नीड अ stress free sleep, which is very very difficult to get. So I did not study for SST and then I gave my paper and I got 41 out of 50. And like that is like इतना बड़ा धक्का because इतने disappointing marks आए हैं मेरे. And the thing is, I feel like I have written all the pointers which I found in the NCERT, but like our teacher expects beyond NCERT, which I totally get. Like they expect us to know everything which was taught in the class, and 90% of the time मैं SST के period में सो रही होती हूँ. So I do not get that, and मैं NCERT का याद करके आती हूँ तो वही पेपर में लिख कर आती हूँ. And I have never really liked the subject of SST. मतलब I just have to study it for one more year in 10th and then 11th मेरे को नहीं पढ़ना होगा. So I am obviously not that serious about it, but yet I would not want to sacrifice my SST marks in my board exams, obviously. So I need to improvise a lot. First thing that my problem was my presentation was very poor in SST because I was very scared that the paper is very very lengthy because we had 4-5 markers in a 50 marker paper. And I thought कि मेरा पेपर छूट जाएगा, so I was just writing and I completely forgot about the presentation. And SST के पेपर में I suggest हमेशा आंसर पॉइंट्स पे लिखो and make sure that the order in which you are writing the answer is also correct. And मैप वर्क हमेशा पेंसिल से करो, do not like risk doing it with a pen, and make sure at least हमारा मैप वर्क नीट हो because that is basically free के marks. Other than that, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता हो then just basically write it in a paragraph, and जो words तुम्हें लगता है ना कि ये तो correct है ही उनको बस highlight कर दो. It will guarantee you maximum possible marks if your teacher does not read every single word of your answer. I think like हमारे स्कूल में our SST teacher, she reads almost every single word, which I really appreciate. Like and like she tells जो मेरे mistakes होते हैं, which also I really appreciate. Like it really really helps me out like for future. So I know all of my SST mistakes. Mainly I missed out a lot of pointers which she told us in the class because I was sleeping. But now I have noted them down. ठीक है, इसमें मैं तुम्हें क्या फीडबैक देना चाहूंगी. अगर तुम्हारे इतने कम मार्क्स आते हैं then go to your teacher, ask her what mistakes you made and write the corrections on a piece of paper and refer to that when you're studying for your next exam. So the last subject जो बचा है हमारा, जिसके मेरे पास once again पेपर नहीं है तो मैं तुम्हें ouch my leg hurts, जिसके मैं तुम्हारे मार्क्स अपने मार्क्स लेके यहाँ पर ऐसे शो नहीं कर पाऊंगी. इन इंग्लिश आई हैव स्कोर्ड 46.5 which is basically 47 because 47 लगेंगे. So yeah, I can say I scored 47 out of 50 in English, which I think again is pretty good because I did not study for English also. I was super lazy. I hate studying for languages and I hate studying for ऐसे subjects जिसमें रट्टा ज़्यादा मारना होता है because it's not cup of my tea. So yeah, I did not study for English and I got almost 46. I mean, I got 46.5, which is basically 47. Like स्कूल में अगर 46.5 आए हैं हमारे स्कूल में, then basically उसको 47 ही काउंट करते हैं. So yes, I have gotten 47 out of 50 in English. I have said that so many times. English में all the mistakes that I made were in grammar, and 1 mark was deducted in the 8 marker letter, which is deductive to almost everybody in our school. Like nobody really gets full marks in letter. या मतलब writing में कहीं ना कहीं deduct हो ही जाता है 1 mark. So that is justified. I cannot really help that, and I think I wrote pretty well because usually मेरे ज़्यादा marks deduct होते हैं. And बाकी मेरे marks grammar में deduct हुए थे, and I don't know how to work on that because I really dread studying grammar like अलग से, because usually it is quite simple.
बट अगर तुम्हें भी ग्रामर में दिक्कत आती है सो दिस इज व्हाट आई डू व्हेन आई हैव टू स्टडी ग्रामर अलग से. I go on Google and I search up like class 10 difficult level grammar topic X with my topic है, practice questions with solutions, and I go on all the like good websites like Teachu, Byju's, Vedantu. All of these are pretty good websites for questions and I practice, and CBSE के official websites also, they are also pretty good for questions because कभी कभी like तुम्हारे स्कूल के टेस्ट में वहीं से पेपर मतलब वहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे. हमारे स्कूल में भी ऐसा ही होता है. सो येस, मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस उधर से अगर तुम्हें ग्रामर में दिक्कत आती है, बिकॉज थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी सो यू विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट एंड यू वोंट मेक सच मिस्टेक्स इन योर पेपर. So guys, that was all I had to discuss for today's video. I hope that you all liked it. If you did, make sure to subscribe to my channel and turn on the bell icon so that you get all the notifications of my new videos. And comment down below your favorite part of this video, and like अगर कुछ तुम्हें इस पे कमी लगी इस वीडियो में तो वो कमेंट कर देना, because I like to improve myself with every video. And I expect कि तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद you will reflect on my marks, not my marks, you will reflect on your marks just like I reflect on my marks. And अपने मार्क्स पे रिफ्लेक्ट करने के लिए यू डोंट नीड टू मेक अ वीडियो लाइक मी, जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड दैट इज योर रिफ्लेक्शन. दिस रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू इम्प्रूव इन योर फर्दर एग्जाम्स. वेल गाइज, बाय बाय.